ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज की वर्कशॉप में वी वांट टू गो ओवर समथिंग जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है कि यार आई एम अ फ्रीलांसर, आई हैव बीन फ्रीलांसिंग फॉर अ व्हाइल, 4-5 महीने एटलीस्ट। आई फाउंड सम सक्सेस विद इट, बट नाउ व्हाट शुड आई डू? बाकी पूरी जिंदगी क्या मैं अपवर्क और फाइवर पे बस जॉब्स अप्लाई करता रहूं और अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करता रहूं, या इज देयर अ बेटर वे और अ स्ट्रेटजी आई कैन एम्प्लॉय going forward? Now, this workshop I would like to preface is more relevant to people who are freelancers, existing freelancers, and who have found some level of success with their freelancing activities. अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं, आपको फ्रीलांसिंग का कुछ नहीं पता, आई वुड रिकमेंड गो वॉच एंड लिसन द पास्ट वर्कशॉप्स वेयर वी डू अ मोर इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ टॉपिक. दिस आई वुड बी मोर फॉर लाइक इंटरमीडिएट फ्रीलांसर्स जो थोड़ा बहुत अब फ्रीलांसिंग कर चुके हैं, एक दो प्रोजेक्ट उठा चुके हैं या एक दो क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं. Then what you should do, right? So today's discussion is going to be around marketing yourself as a freelancer, right? So marketing your freelancing skill set or whatever you want to call, and that's going to be the whole session around it. In this, we're going to go over sabse pehle to what are the prereqs. There needs to be like certain things you need to do before you start marketing. Then some of the platforms where you can market yourself. And in the end, we're going to talk about the most important point, do's and don'ts of marketing from a freelancer perspective. One more thing is that this will be more relevant to solo freelancers, but there are some things that will come. Joe, like if you are in an agency, yeah, if you're like more successful, they might not apply to you. So I'm doing a generalistic overview of everything you need to do as a freelancer. But if you're an agency, just be careful. There might be some things that थोड़ा सा different होंगे आपके लिए. Someone said in the chat, LinkedIn पे spam करो मुसलमानों, and yes, that will be discussed. So सबसे पहले let's talk about prereqs. तो prereqs is something that I am a very big passionate fan about. हम हमेशा बात करते हैं कि यार देखो, if you are a freelancer, if you are a professional, regardless of whoever you are, there are some things जो हर किसी को करनी चाहिए. तो even if you're not a freelancer, if you're an employee, you should be doing this regardless of the fact कि you're not freelancing, which is कि have these list of things ready to go whenever asked. Number one is, of course, जो कि हम बहुत दफ़ा पांडा पीट चुके हैं, पोर्टफोलियो या जिसको कहते हैं वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट आपकी होनी चाहिए. And we've talked about this काफ़ी दफ़ा. I'm not going to go into detail what should be on the website, but simply speaking, a single pager website which lists who you are, what do you do, what you're good at, your past clients, projects, and like testimonials if possible. And then very, very, very important, a way to book a call or connect with you or whatever you want to call it. A way to book a call. This is very important. A lot of people still miss this. वो लिख देते हैं अपना ईमेल एड्रेस मेरा ये है, मुझे ईमेल कर दें. इतना टाइम किसी के पास नहीं होता आजकल. गो साइन अप ऑन अ कैलेंडली या गूगल कैलेंडर में नेटिव इंटीग्रेशन भी आ गई है. हैव अ कॉल बुकिंग लिंक, एंड येस ऑफ कोर्स ईमेल को एज अ सेकंड ऑप्शन आप उधर नीचे रख दें, लेकिन दिस शुड बी द प्राइमरी वे. दिस इज हाउ स्टफ इज डन राइट नाउ. एंड देन ऑल्सो इफ यू हैव अ बुकिंग लिंक, इट हेल्प्स व्हेन जब हम बाद में मार्केटिंग की बात करेंगे, टू सेंड दैट वेरी लिंक टू पीपल यू आर ट्राइंग टू मार्केट टू. So have a website, have a booking link, put your email there if you want. Some other best practice stuff I can mention thoda bahut briefly is like, if you are doing a one-pager website and portfolio, try to niche it as much as possible. Now you are an early freelancer, तो अभी आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा. यू विल बी बेसिकली उस माइंडसेट में कि यार जोन सा भी प्रोजेक्ट है आने दो. आई डोंट केयर इफ इट इज़ लाइक वेब और मोबाइल और वट एवर. राइटर हो तो आई डोंट केयर इफ इट्स अ ब्लॉग, इट्स आर्टिकल, केस स्टडी. It's really hard to specialize when you're an early freelancer, but keep in mind that you need to niche if you want to stand out. And if you want to niche, think about categories. like देखो अपने past projects, देखो अपना past काम देखो, and see के are there any trends, right? Are you working in similar industries? Like maybe आपका ज़्यादातर projects अभी तक real estate में है, for example. अगर ये नहीं possible तो देखो जो ज़्यादातर projects आपने किए हैं B2B हैं या B2C हैं या DTC हैं. You can Google these terms and understand what they are. Try to niche by maybe category of platforms के mobile है, desktop है, so on so forth. Try to niche by like social media platform. अगर आप if you're a content writer या designer, तो you can be like अच्छा मैं LinkedIn की post बनाता हूँ या whatever. But the basic idea is
try to figure out a pattern in your past work and in your skills and capabilities that exists, and try to lean towards that on your website. Now I want to say here one thing, जो most common question मुझे आता है जब भी मैं किसी को कहता हूँ कि niche करना है, like let's say you're a designer and you do content design, and I tell you like अच्छा यार, what kind of content do you design? And they're like, oh, I can do anything. I can do brochures, I can do one pages, infographics, carousels, slide decks, blah 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 blah. And I tell them, अच्छा, pick one and market that. And I'll be like, okay, pick let's say LinkedIn infographics, just as an example. So the most common lashback I get is like, लेकिन मैं बाकी सब कुछ भी तो करता हूँ. I just don't do this. I do this. And I'm like, yeah, that's fine. But on your marketing material, i.e. your website, you need to pick one if you want to stand out. अगर आप वेबसाइट पे एकदम खुला हम बोल दोगे कि मैं जी ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, then you're saying you're not an expert at any one thing, you're a generalist. And आजकल especially in a very competitive landscape या marketing, it's really hard to stand out. So try to niche as much as possible and try to market that. That does not mean कि आप बाकी चीजें नहीं करते. That just means कि you want the client to come through the door based on one promise, which is like मैं LinkedIn infographic करता हूँ, आपने उनके 5-10 LinkedIn infographic बनाए, and then you upsell the client. Like यार देखो, मैं असल में full stack designer हूँ, आपने मेरा काम infographic पे देख लिया. Now I can also like do your website or whatever additional services you want to sell. This all happens behind the door, but the door needs to be one door. Don't give them 20 different doors to get confused. I hope that makes sense. And like as I said, developer may be same thing. If you're a developer, let's say you're a web developer, don't just say like I am a web developer. Say like, okay, I develop e-commerce websites. Specify it. Then कोई अगर e-commerce का client आता है, then you can like diversify and be like, अच्छा यार मैं custom apps भी बना देता हूँ, मैं integrations भी कर देता हूँ, मैं third party काम भी कर देता हूँ, so on and so forth. E-commerce again is very competitive already, so it would be better if you can further niche it down to like, let's say garments की e-commerce के मुझे fashion brands और उनके e-commerce के काफी बारे में पता है, and so on and so forth. But you generally get the idea. The higher the competition for your skill set, the more you need to focus and niche down. That's the rule of thumb. Depending on your case, it might be different. If you are, let's say, like my example, I was a product manager when I started freelancing. No competition there. So I didn't need to niche. मैं सब कुछ करता था, and it worked because I was a product manager. It itself was a very niche role. But if you're a web developer, if you're a graphic designer, if you're a web designer, if you're a writer especially, there is very, very, very high competition. And that's why you need to niche even more and more and more till you find a nice balanced spot where you can market everything on your front page and on your website and everything. Okay. Lastly, one thing that every early stage freelancer sucks at, actually even late stage freelancers suck at, is intro नहीं आता करना. ठीक है? We talked about this I think in a couple of workshops and before also. Okay, yeah, देखो, if I ask you like, hello XYZ, tell me about yourself. This is same like जैसे आप इंटरव्यू में बैठे हो तो इंटरव्यू में भी एक सा सवाल होता है, tell me a bit about yourself. Prepare an intro for yourself beforehand. And जैसे कि मैं बोला, if you are niche down, this will also help you. Because let's say अब हम अपना एग्जांपल लेते हैं ये LinkedIn कंटेंट डिजाइनर वाला, उसमें मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कि अच्छा यार मुझे अपना इंट्रो दो. Then I could go like, hi, insert my name, which could be like, hi, I am Solo. तो मेरा नाम आ गया. And then you can be like your skills. And then you could be like, okay, industry or platform. And that is as simple as that. इससे ज़्यादा लंबा होने की ज़रूरत नहीं है. To give an example, it could be something like, hi, my name is Solo. I am a graphic designer that primarily works with clients over at LinkedIn. My specialty includes doing content design for people who like to post about interesting ideas. I love designing infographics that provide valuable information to readers and to make complex and hard to digest ideas easy to understand through my visuals. That's a killer intro, right? And that's how you do an intro. And ये मैंने भी मतलब अपने सर से बोला, अच्छा निकल आया. But as I said, it's not that hard. It's just like who you are, what do you do, who you do it for, and then end पे थोड़ा सा spice add कर दो. And that is your intro. Learn to have an intro, and once you learn to do it, you can do an intro for anyone like me. Like मुझे बैठा के मुझे बंदे का नाम बताओ, उसका स्किल बताओ, इंडस्ट्री बताओ, मैं उसका इंट्रो फेक बना दूंगा.
मैं इसके 100 रुपए चार्ज करूंगा अगर मेरे से बनवाना है इसके बाद। खैर, हैव एन इंट्रो रेडी टू गो व्हेन समवन हुएवर व्हाटएवर आस्क्स यू, भाईजान आप क्या करते हो, ठीक है। सो दीज आर द प्रीरेक्विजिट्स दैट यू नीड टू हैव बिफोर यू इवन कंसिडर मार्केटिंग, राइट। एंड देन यू माइट आस्क, सोलो भाई मैं अभी अपवर्क पे हूँ, मैं अभी फाइवर पे हूँ, so on so forth. Why do I need to have these many things prepared for you? And इसका आंसर ये है कि देखो, when you're freelancing on platforms like Upwork and Fiverr and Insert XYZ, जितने भी platforms हैं, they do the hard work for you. जब आप प्रोफाइल बनाते हो, वो आपकी प्रोफाइल एक अच्छे तरीके से बनाते हैं कि जी नाम लगा है, फोटो लगी है, बायो है, उसमें प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है। फिर आप गिग्स बनाते हो, उसमें आप अच्छे अच्छे कवर इमेजेस ऐड करते हो। फिर आप पोर्टफोलियो बनाते हो, उसमें अपना पोर्टफोलियो ऐड करते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करते हो। फिर वो कहता है अपनी वीडियो भी डालो। तो वो ये सारी मेहनत आपके लिए करवाते हैं आपसे स्टेप बाय स्टेप वो, लेकिन उन्होंने इतने ईजी टू अंडरस्टैंड और स्टेप बाय स्टेप वे में की होती है ना, यू फॉरगेट अबाउट इट। नाउ यूर लाइक कि आई वांट टू डू डायरेक्ट मार्केटिंग एंड आई वांट डायरेक्ट क्लाइंट्स, एंड यूर लाइक कि मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े। ऐसा नहीं होता। वट एवर यू डिड हेयर फॉर प्लेटफॉर्म्स, मल्टीप्लाइड बाय 2 व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट एफर्ट वाइज। अगर आपने अपवर्क पे, लेट्स से अपवर्क की प्रोफाइल सेटअप करने में एंड टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट आपको 100 दिन लग गए, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, तो जो आपका डायरेक्ट क्लाइंट है, डीसी कहते हैं इसको, इस पे आप जेन में रखेंगे आपको 200 दिन लगेंगे, ठीक है, 200 days। इट इज 2x, as low as 2x. Again, depends on what skill set you are, how good you are, how you sell it. But generally speaking, everything you do on a platform is harder to do off of platform. That's why these platforms exist. अगर ये platform की जरूरत ना होती, हर कोई direct client पकड़ लेता आराम से, तो फिर platforms ना exist करते. That's why I said, like, when you're starting out fresh, it is always good to start on a platform, Upwork or Fiverr. But once you reach an intermediate stage, which is this workshop, you should look to expand to DC, because in the long run, you should always look to scale beyond the platform, because platform में थोड़े से issues आ जाते हैं. तो now I'm gonna say why this 2x is justified. तो like the natural next question ये बनता है ना कि you're saying कि आप पर पे इतना एफर्ट लगता है क्लाइंट ढूंढने में एंड डायरेक्ट में लिटरली डबल एफर्ट लगता है, क्यों मैं डायरेक्ट जाऊं? तो नंबर वन रीजन इज ऑब्वियसली कंट्रोल. When you have direct clients, you control the direct client, right? If you have any issues with the client, if you want to upsell them, if you want to like pitch them different services, if you want to maintain a relationship with them, it is all 100% in your control. आपको किसी प्लेटफॉर्म की नहीं सुननी पड़ती, आपको कुछ ये नहीं सुनना पड़ता, ये कोई इशू नहीं होता कि यार मैं एक और बंदा इन्वॉल्व करूंगा अपने साथ, उस पर कोई रूल नहीं है, टीओएस ब्रेक कर रहे हो, सो ऑन सो फोर्थ. You have a control 100%, given that you have 100% trust from the client and you trust the client 100% to pay you on time. That is a warning I want to give. Platform का एक ये फायदा होता है कि उन्होंने पेमेंट आपकी सेव की होती है. But that's what I'm saying. Once you're a थोड़ा सा advanced freelancer, you can figure out those things, and control matters way more than anything else. Number two is, whenever you're on a platform, regardless of how good of a freelancer you become, ठीक है, मैं एक डिजाइनर हूँ, मैं $1 लाख कमा लिया मैंने अपवर्क पे. Whenever I apply to a new job, I will be positioned next to a million designers जिन्होंने $1 लाख कमाया हुआ, because it's a platform, right? The buyer or the client here has multiple options to pick from, and you're just one of those options. You could be a very good option, but you are still an option. But on your own platform, on your DC, on your website, on whatever you decide to make, there is no competition. It's just you. बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे आया, बंदा तुम्हारी प्रोफाइल पे आया, and they don't see that much competition around because it's not a platform, it's a more personalized, one-on-one platform. So that's the second reason you should look to diversify, is that you want to own your client. You don't want to show them the competition, you don't want to show them the other things. And the third thing is, direct clients is diversifying yourself. Okay, there will always be a risk, especially we being in Pakistan and countries like this, जहाँ पे हर वक्त कभी पेमेंट्स के इशू हैं, कभी लीगल इश्यूज हैं, कोई पता नहीं कल को अपर डाउन कर दें, कोई पता नहीं कल को फाइवर बैन कर दें. यू शुड नेवर पुट ऑल योर बास्केट्स इन वन एग. नहीं, मैंने क्या बोल दिया, ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट? तो डाइवर्सिफाइंग इज ऑलवेज गुड in the long run if you want. But this all does not mean that you should leave Upwork या Fiverr. This is the thing that I hear a lot. It's like Upwork छोड़ दो, Upwork is dead, Upwork का कोई नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है. Upwork will always be there, Fiverr will always be there as long as they don't mess up
really hugely. So fingers crossed, as I record, कि Upwork and Fiverr will be there as long as it is. And the reason is कि they are platforms, and platforms में जैसे कि मैंने बोला early freelancers के लिए start करने के लिए platforms are way easier than doing direct. So what I would suggest is when you are an intermediate freelancer, try to go for like a 60-40 ratio. 60 आपका platform पे and then 40 आपका direct DC client. And then obviously as you grow more and more in Kalko, if you transition into an agency or something else, you can do something else. But for this is the ratio I recommend. Because इसमें क्या होता है कि platform वाले जो clients होते हैं are usually easier to manage, less headache, more stable. And then जो direct clients होते हैं इसमें ज़रा आपको extra effort करना पड़ता है, ज़रा मेहनत करनी पड़ती है, but the payoff usually is higher here. इधर payoff आपका शायद lower हो, लेकिन आपकी जो consistency है ना, stability जिसको कहते हैं, या जॉब सिक्योरिटी कह लें, अगर आप जॉब वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, द स्टेबिलिटी इज हायर, स्टेबिलिटी इज हायर है, डॉलर इज हायर है. डायरेक्ट क्लाइंट का क्या होता है, कभी आया कभी नहीं आया, कभी सीजन ऑन है ऑफ है. सो दैट्स व्हाई 60-40 का स्प्लिट इज व्हाट आई रिकमेंड इफ यू आर अ सोलो फ्रीलांसर. अगेन आई एम एम्फसाइजिंग दिस क्योंकि यहाँ पे कोई एजेंसी वाला बैठा होगा और कहेगा कि मेरे पे ये नहीं अप्लाई करता, एंड यस इट डजंट अप्लाई टू यू. आई एम टॉकिंग अबाउट अ सोलो फ्रीलांसर. Now, the last segment of the workshop is basically, okay, ये सब कुछ prep कर लिया. I understand why it's important to diversify and market to other clients. How do I do it? तो सबसे पहले let's talk about the 3 platforms I like. ठीक है? And the reason is कि I can only talk about my personal experiences and I want to tell you about my personal experiences. I don't want to tell you कि जो मैंने खुद ना try किया हो. In my experience, the 3 top platforms are social media, number 2 पे communities, and number 3 पे is email. These are the 3 things I have most experience and most success with. Social media, primarily LinkedIn. It doesn't have to be LinkedIn. It could be X or Instagram, depending on what your skill set and sensitivities are. Communities, mein, I would say number 1 for me is Discord, but I have seen good success, कह लो, in other experiences Reddit के साथ also. And then email जो है, email होती है. Oh, I'm sure everyone knows what email is. So the reason why I picked these 3, I can tell you, is कि जो social media ना, especially why I like LinkedIn. LinkedIn gives you everything about your future client, या कह लो prospect जिसको कहते हैं, marketing की term सीखते हैं, prospect. What is a prospect? Prospect is someone who you can sell something to maybe down the road. In simple speak, ठीक है, ज़्यादा technical नहीं होते. तो LinkedIn has वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि वहाँ पे आपको बंदे का नाम पता चल जाता है, बंदे की लोकेशन पता चल जाती है, बंदे की कंपनी पता चल जाती है, वर्क एक्सपीरियंस पता चल जाता है, कनेक्शंस पता चल जाते हैं. इट गिव्स यू द मोस्ट अमाउंट ऑफ डेटा आउट ऑफ एनी सोशल मीडिया फॉर यू टू अप्रोच देम एज अ सर्विस गिवर. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक लिंक्डइन के व्हेन यू आर ट्राइंग टू मार्केट especially on social media. I believe LinkedIn has the biggest data points. बाकी कोई इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं, क्योंकि Instagram में सारे anonymous ID से बैठे होते हैं, Twitter पे भी सेम थिंग, सारे anonymous ID में बैठे होते हैं. बाकी सोशल मीडिया से मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं इतना यूज नहीं करता. फेसबुक में आई थिंक अंकल आंटी बैठे होते हैं सारे. LinkedIn so far in this right now, currently speaking, I think gives you the best prospects which you can do your marketing to, because they give the most data points. And that's why I pick LinkedIn, like whenever we talk about social media marketing. Then communities में why I pick Discord and Reddit, because जैसे कि वो going back to our earlier point, niche. It's easier compared to other platforms to find niche-based communities on Discord or Reddit. So let's say if you're into design, there will be design communities on both of these, like subreddits on here, and Discord पे servers where you can go, and there will be like designers and people who are looking for designers and so on and so forth. So like, because Discord and Reddit का सारा idea ये है कि it's a tribes या community type का system based on common interests या share interests. It's easy to find the niche you belong to and find similar people, and then hopefully have, like, down the road you can sell them services, or you can talk to them or collaborate and so on and so forth. So Discord and Reddit, that's why it's good, because it lets you niche like with your like skill set. Cool. And then lastly is email. Cause email will never die, regardless of जितने मर्जी WhatsApp, ये वो Snapchat और Gen Z आता रहे, email still runs the world.
every one of you has an email address and no one of you can ever live without an email address. So far so good. अभी तक कोई पता नहीं अगले साल भी everyone reaches their email, but email because everyone has it. And everyone does to some extent check their email, and they might not check any other platform, but email almost everyone कभी ना कभी check करता है. तो इसलिए like it's has the highest hit chance कह लो, so to say, if you are going through email. ये 3 प्लेटफॉर्म्स डिस्कस कर लिए. नाउ आई वांट टू ऑब्वियसली टॉक अबाउट, अच्छा यार अब इन पे मार्केटिंग करनी कैसे है. तो आई एम गोना गिव यू अ कपल ऑफ अप्रोचेस फॉर ईच 3 ऑफ दीज, बिकॉज़ इनके साथ मेरा सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है. आई एम गोना टेक 10 सेकंड्स ब्रेक आल्सो, मेरा गला सूख गया. अच्छा, नंबर 1 शुरू होते हैं. सोशल मीडिया, लिंक्डइन. अच्छा, लिंक्डइन पे अब क्या करना है. इसी मेरा व्हाइट बोर्ड खत्म हो गया. बाय द वे, कैन समवन मैसेज चैट में इफ यू कैन हियर मी, बिकॉज़ आई एम म्यूट अनम्यूट. यस, ओके, गुड, कूल. सबसे पहले लिंक्डइन की बात करते हैं. जैसे कि मैंने बोला ना, लिंक्डइन पे यू गेट द मोस्ट आइडिया ऑफ हु योर प्रोस्पेक्ट इज. अब लेट्स tie that to yourself. You are a web developer that develops, let's say, ERP solutions. बेसिक सी इन्वेंट्री मैनेज, चलो ERP को छोड़ो, ERP इज अ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स आप बिल्ड करते हो. And let's take it a step further. You build inventory management systems for shoe sellers, just to give an example. जो जूते बेचते हैं लोग, ठीक है. Now on LinkedIn, if you use LinkedIn properly, and you can Google this also, you can find a list of companies that are shoe seller companies. Like अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, यहाँ पे तो इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन let's say I go to my local market, जहाँ पे 10 ब्रांड है, बाटा, सर्विस, so on so forth. You get the idea. Obviously पाकिस्तान में लिंक्डइन पे नहीं बैठे होंगे, but the goal is कि आप अमेरिका या यूके या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे भी आप हैं, आपने जो भी कैटेगरी पिक की है, उसके आप ओनर्स जो हैं ढूंढेंगे लिंक्डइन के ऊपर. When you find those owners, you'll know who they are, where they are from, what their content is like, अगर वो posting वगैरह कर रहे हैं, so on so forth. Now, the point of having all this data for your prospect is that you personalize your approach. If you are not personalizing your approach and outreach, then कोई फायदा नहीं उनके लिए. you're just spam or you're just like bot message or whatever. सारी मेहनत करने का फायदा यही है कि if you actually care about what they do. Let's say I find a store जिसकी वेबसाइट खराब है, लाइक क्या कहते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम खराब है, या पहले वेबसाइट का एग्जांपल देता हूँ फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का दे देता हूँ. एक मुझे शू स्टोर मिला, मैंने उनकी वेबसाइट खोली, उनकी वेबसाइट में 10 मसले निकल आए, 10 इश्यूज. तो मैं अब उसके फाउंडर को सीधा जाकर ये नहीं कहूंगा यार गो बाय माय वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, नहीं. उसको मैं ये कहूंगा, हे XYZ, जो भी बंदे का नाम है, I have taken an interest in, like, shoe stores or whatever in the blah 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 in the past couple of days. I was just going through some of the good stores in my area. Yours came up as one, and but when I visited your website, I saw some issues. Would you like to learn more about them? ठीक है. That way you can pique the interest of the person कि अच्छा यार इस बंदे ने रिसर्च की है, मेरे इसने लाइक देखा है कि मेरे स्टोर में क्या इश्यूज हैं, एंड नाउ दे ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, एंड दे विल बी मोर लाइकली टू कनेक्ट विद यू, एंड देन यू कैन स्पार्क ऑफ अ कॉन्वर्सेशन. तो सी, आई डिडंट डायरेक्टली सेल माय सर्विस और एनीथिंग. आई जस्ट केम ऑफ एज नेचुरली, एज रियलिस्टिकली, बिकॉज आई डिड ओपन देयर स्टोर, आई डिड गो टू देयर वेबसाइट, आई डिड फाइंड 10 इश्यूज. इट्स नॉट लाइक आई एम लाइंग, झूठ नहीं बोलना. आपने बस ये बताना कि मैंने ये सारी मेहनत की है, तो मुझे लगा ये इश्यूज हैं, तो वी कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू फिक्स दैट. वुड बी योर अप्रोच. दैट इज वन एग्जाम्पल, पर्सनलाइजेशन. अब जिस तरह वो मैंने इन्वेंट्री का कहा था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दैट इज अ हार्डर सेल, बिकॉज देखो यू आर एन आउटसाइड पर्सन, तुम्हें अब नहीं पता स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा यूज कर रहा है, राइट? तो द ओनली वे यू कैन अप्रोच देम इज लाइक, हे लिसन, you are a shoe store, right? So you must have some kind of inventory management system.
Here's the thing, अपना रिजल्ट की बात करो. I have built inventory management systems for 20-50 stores ये वो, and usually we increase like whatever metric inventory management store वाले use करते हैं. I'm not familiar, लेकिन let's say we cut down like efficiency issues by whatever percentage ये वो. Would you like to be interested in some knowledge and tidbits I can share with you? सर्विस नहीं बेचनी. पहले स्टेप में हमेशा try to sell either knowledge और योर एक्सपर्टीज इन द सेंस के बता दो कि यार तुम्हारा अगर ये तुम्हें इशू फेस हो रहा है, मेरे पास इस इशू का हल है. वुड यू लाइक टू बी इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट इट? ठीक है, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. डोंट ट्राई टू बी लाइक मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टोर बनाता हूँ, कैन आई मेक योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टोर? दे विल बी लाइक भाई व्हाई वुड वी बॉदर मेकिंग अ न्यू इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टोर, राइट? फर्स्ट ट्राई टू एजुकेट देम. So this is the what I'm telling you abhi tak is like how you can cold outreach people on LinkedIn with a personalized invite message जिसकी 300 character limit होती है. So you have to fit all that into 300 characters. And as I said, you can go online, Google the template, or you make your own. But I've told you the formula for it. Formula is basically, yaar, hi, the person try to connect and talk about their business in one line. Ki, yaar, I found your store, yeah, I found your business, whatever. Try to talk about a typical problem a business like them would have, and then try to educate about the solution that you may have or the solution you would ready to provide. तो अगर कोई checklist है, कोई tidbit है, कोई documentation है, कोई SOP है, that's how your cold reach should be. It should be personalized. If it's not personalized, nobody cares. And then if you like, यही वाली बात है, ये वाला सारा process करके outreach करोगे, let's say you outreach 10 people, I can guarantee you एक या दो at least interested होंगे to talk to you, and that is a good success rate. Similarly, अब आ जाओ Reddit और Discord पे. Reddit और Discord क्योंकि as I said they are communities, right? And communities में you have to be very honest with the community. You can't be like जिस तरह 99% लोग करते हैं कि community में घुसते हैं और कहते हैं hi, I am web developer, do you have work for me, give me work. Nobody cares about you, who you are, right? So Reddit and Discord may, I would generally say 1 to 3 months explore only. Try to join different communities, try to sit in them, try to, if they have events, if they have popular posts, whatever. One say, like I would say 1 से 3 महीने तक just be a lurker. Lurker mode में रहो. Just figure out which of the communities has stuff happening, which is the community which aligns with your personality, with how you talk, how you walk, or just be like, which is a community where you genuinely would be fine contributing to and be a part of, right? That's the main thing. If you are not honest with yourself, this won't work for you. And that is the biggest mistake most people make. कि वो किसी community में घुस जाते हैं just sale pitch मारने and nobody cares about them. But if you actually do care about the community, then trust me, there are people who have gotten really good opportunities from Reddit and Discord. तो हाँ, पहले 1 से 3 महीने explore phase में जाओ, and then that is where nurturing शुरू, इसको मैं कहूँगा nurture phase, where you start being active part of the community. So let's say you're a designer, you join Creative Paradise, which is like one of the bigger design communities. Creative Paradise Discord पे जाओगे तो पहले अब 3 से 6 महीने पहले 1 से 3 महीने you lurk, you see how it is, what they do, what they talk about. Next 3 to 6 months, you're just contributing and you become an active member of the community. And then that is it. Because the thing is, when you're contributing for 3 months to any community, if an opportunity comes, you will most likely be tagged in it if the skill set is yours. क्योंकि होता है ये, अब जिस तरह ये हमारे सर्वर की बात है, द वॉन्डरिंग प्रो की, दिस इज नॉट अ मार्केट प्लेस और अ प्लेटफॉर्म या फ्रीलांसिंग. हम लोग नहीं इधर कहते कि जॉब्स मिलती हैं, कुछ मिलता है. बट it has happened पिछले 1 साल में, and I have seen people get actual paid work in this server because होता क्या है कि कोई ना कोई काम आता है, and because I know some people who are active and I know their skill set, मैं उनको recommend कर देता हूँ and they actually did get employed कहीं ना कहीं पे. 2-3 लोगों के साथ ये हो चुका है. और this is obviously a very small community, इसमें मुश्किल से 200 बंदे हैं. The idea is कि if you join like a bigger community जहाँ पे 5-6 हज़ार लोग हैं and you contribute properly वहाँ पे, become someone who stands out, when the opportunity comes, you will get connected to it. So the difference between these two approaches is
ये जो पहली लिंक्डइन वाली अप्रोच है, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस इन द पास्ट, इट्स एन एक्टिव अप्रोच। इस पे आपको खुद से काफी एफर्ट करना पड़ेगा, काफी रिसर्च करनी पड़ेगी। यू हैव टू गो एंड लाइक फाइंड द राइट पीपल टू रीच आउट टू, कस्टमाइज योर मैसेजेस एंड डू अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड ऑब्वियसली इसका पे ऑफ भी मच मच बिगर होगा। एंड दिस इज मोर ऑफ व्हाट आई वुड लाइक टू से, लाइक इट्स नॉट लाइक डेड या बिल्कुल कुछ नहीं करना, पर इट्स लाइक मोर पैसिव, where you're just coming in and there saying hi, being active, maybe spending 15-20 minutes a day. And this is like you're just doing it for a longer period of time, so this takes longer time, but either once you get an opportunity it will be like kind of like automatic आपकी तरफ आ जाएगी, organic जिसको हम कहते हैं। This is more organic. You are not reaching out to clients, you're not finding work, it will find you. And this is more active कि you are actively hunting people and trying to connect with them and try to sell them your services and so on and so forth. Which brings us to the last approach, which is email. अब email जो है is something I will only touch briefly because this itself can become a whole workshop. The only thing I want to touch about in email is like if you are a early freelancer or intermediate freelancer, try to do something which will result in you building an email listing, या email list कह लें, whatever you want to call it. Write a blog, write a newsletter, maybe do lead magnets, something करें जिससे आपकी थोड़ी बहुत ईमेल लिस्ट बनना शुरू हो जाए। एंड लाइक यू कैन, एज अ सेड, आप न्यूज़लेटर शुरू कर सकते हो, ब्लॉग कर सकते हो, लीड लिस्ट कर सकते हो, वट एवर। द रीजन आई एम सेइंग दिस इज के यू शुड स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद द ईमेल मार्केटिंग थिंग इवेंचुअली। तो उससे पहले आप कर सके, यू नीड टू लर्न हाउ टू मेक एन ईमेल लिस्ट, या हाउ टू बिल्ड अ ईमेल लिस्ट फॉर योर क्लाइंटेल और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और वट एवर यू वांट टू कॉल देम। The thing is ke this thing will teach you once you eventually do go into a services business and do open an agency, okay, this is a very good way to market yourself, but basics seekh learn. The reason I mentioned this here is like if you're solo, start giving more and more attention to how email systems work, how email marketing works, जिसमें होता ही है कि you have a list of email and you write content to nurture them to eventually make them your client, right? Now, this kind of effort, as I said, ये पहले active and passive हो गया. This is what I would call experimental. And usually क्या होता है, why I'm giving so many options is कि यार देखो, depending on what kind of freelancer you have, I'm not saying कि ये तीनों करो. At least do one of them. That's the main getaway from here. कि यार at least do one of them. Either do active effort if you are willing to do that. Either do passive effort, or at least start experimenting with email. Try to build an email list, try to nurture an email list, and कल को क्या होता है, खुद ही एक आइडिया आ जाता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। Recently in our server, a lot of people did a lot of LinkedIn posting, and जिन उनकी LinkedIn posting में क्या हुआ, कुछ posts बहुत viral हो गई, right? They got a lot of views, a lot of clicks, a lot of eyeballs, but then the sentiment was common, and I think this happened with 3 people कि यार मुझे views तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन इन views का फायदा क्या है? And that is what I tell them, भाई, this is exactly the point. Views का कोई फायदा नहीं है. It doesn't matter how popular your posts get, because at the end of the day, other than getting to like कहते हैं making reach, yeah, getting to people, you're not doing anything, you're not selling anything, right? So my first question is like, do you care कि if it only gets views? And if they're like, yeah, I just care कि बस views मिले and like maximum people को reach करें, then it's fine. But if you're like, नहीं यार, I want actually कि people buy something from me or whatever, then that's where views don't matter. What matters is a nurtured email list that has closely followed your content for a long time. So the newsletter or a blog is the best way to do that. Because उसमें क्या होता है कि let's say I have a newsletter, I start writing content about design, right? Now I will promote that newsletter on my social media, yeah, on my क्या कहते हैं whatever कह लें my communities, my circles and ये वो. I says the people will sign up to that newsletter. Now on LinkedIn, maybe my post got like 10,000 impressions, but my newsletter only got like, let's say, 20 subscribers. Trust me, these 20 subscribers are more valuable than the 10,000 impressions you got on LinkedIn. So that's why I'm this whole point of about saying like experimental is कि यार, if you are a solo freelancer, look into blogging, newsletter or lead magneting, ताकि you build a relevant list of people who follow you somewhere जहाँ पे आपका उनका access हो email के ऊपर.
this is really, really important, and this is the biggest pain point I have right now. I didn't start this early. Actually, I had an email list because I used to write content for like SKNXs, as you all know, जिसमें 700-800 बंदे जमा हो गए थे, and I lost that list, and that is really sad. And like I'm struggling really hard to get back to that number, because one organic real email subscriber is easily worth more than like anything on any other social media platform. Why? Because you 100% own that email address. You control it. It's yours. You can market them later, or you can like send them whatever you want, hopefully legal stuff. But like, that's the thing. The goal is like, when you're a solo freelancer, please do experiment with anything that involves emailing. So it could be, as I said, blog, newsletter, lead magnet. The thing is, at the end of the day, अगले 2 महीने बाद कोई नई चीज निकल रहा है, कुछ और निकल जाए, कुछ और निकल जाए. The main getaway should be ke, with all this is ke, you need to eventually take back control. You need to have the versatility, ठीक है? And you need to have direct connections. The platforms will change, the methodologies will change, the process will change, but the fundamentals will always remain, which is like control, versatility, and direct. That's the whole point of this workshop. I'm not saying ke LinkedIn ko abhi karo, you must do LinkedIn, or you must do email, or you must do like organic or whatever. I'm just saying this is the 3 things that worked for me from my experiences. For your experiences, those things might be different. But the main thing, or the main getaway, is ke control, versatility, and directness. Try to establish that as you grow as a freelancer. So over time, you are not like, beholden to one platform, and कल को आपका account ban हो जाता है या कुछ हो जाता है, आप कहते हो भाईजान अब क्या हो गया. Okay, I think we have crossed a good time. Do's and don'ts को पहले मैंने सोचा था सेपरेटली डिस्कस करूं, बट आई पुट देम इन द कॉन्वर्सेशन, सो आई होपफुली दैट मेड सेंस. नहीं तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू always with these workshops is now कि we transcribe the workshop and then do an article over it. तो do's and don'ts जो article होगा उसके end पे मैं mention करवा दूंगा. You can go read that. It will be attached in the YouTube description or in the other link. और आपको email आ जाएगी. Exactly. That's, we have an email list also. So if you're not subscribed, you can go subscribe at the link in the description. And the last thing would be कि एक चीज है, if you're a freelancer and I see you talk to me ever कि यार मैं अपवर्क पे मुझे क्लाइंट मिल जाते हैं, लेकिन लिंक्डइन पे मुझे क्लाइंट नहीं मिलते, एंड देन आई ओपन योर लिंक्डइन एंड आई सी कि आपने किसी बंदे की क्वेरी पे, या बंदे ने कहा कि यार मुझे काम चाहिए, उसके नीचे आपने बस लिखा हुआ इंटरेस्टेड, तो आप मार खाओगे भाई. अपवर्क पे you're literally writing a proposal, you're paying connects, you're sending your portfolio, your proposal, and LinkedIn पे you're just saying interested. ऐसे नहीं काम मिलता. This goes back to जो हमारी पहले डिस्कशन हुई है कि अपवर्क, फाइवर पे जो भी चीज़ है, डायरेक्ट इज 2x हार्डर. डोंट एक्सपेक्ट कि जस्ट इंटरेस्टेड लिखने से आपको काम मिल जाएगा, अनलेस आप कोई बहुत बड़ी बुलाओ, नहीं मिलेगा. Okay, thank you for that. And again, as I said, if you are part of the Discord, you can get to take part in live question and answer जो session के बाद होता है. And I will see you next week or whenever the next episode is recorded.